Hello students, in our last class we had learned we have completed our first lesson, patriotism of reading A. Okay, now we solve the question answer of these chapters. Question first is, what is patriotism? What is patriotism? Patriotism means not only to sacrifice for the country but also to show the love for the country in a small ways. Okay, now look the second question. Why is the national anthem not played in the cinema halls these days? इन दिनों सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम क्यों नहीं प्ले किया जाता? बिकॉज the national anthem is not played. Answer: the national anthem is not played in the cinema halls these days because later it was found that the people used to leave the hall midway, बीच में ही छोड़कर चले जाया करते थे, laughing, shouting and creating a racket. Okay, now the third question is, why did Nanaji take Ajit and Naina to Himapet? वे हिमापेट क्यों ले जाना चाहते थे? नानाजी किसको? अजीत और नैना को. Nanaji took Ajit and Naina to Himapet because he wanted to show them the example of patriotism. There वे वहाँ उन्हें patriotism का example, उदाहरण जो है वो बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे. Now the next question, why did Akash decided to settle down in India? What does it show about his character? आकाश ने सेटल डाउन होने के लिए इंडिया में क्यों सोचा, और एंड व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, वह उसके चरित्र के किस चीज़ को शो करता है, दर्शाता है. आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही सर्व द इंडियन पीपल बाय हिज प्रोफेशन एंड it shows that Akash had love for his country and countrymen. Now the next question, question number 5. How did the villagers express their gratitude to service provided by Akash? आकाश के लिए villagers express their gratitude, अपने gratitude को उन्होंने किस तरीके से आकाश के लिए express किया? The answer: the villagers collected the donation for building a small hospital in the village, and after completion, जब वह complete हो गया, they invited Akash's parents in the opening ceremony and Akash's father inaugurated the hospital. आकाश के पिता ने उस हॉस्पिटल का inauguration किया. Now the next question number 6. What difference do you notice between Akash and his friends? दोनों आकाश और उनके फ्रेंड्स के बीच आपने कौन से जो डिफरेंसेस है वो आपने नोटिस किया? आंसर: आकाश थॉट अबाउट द सर्विस फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन बिकॉज he thought that the government had spent thousands of rupees in educating him and it was his duty to serve his country first. उसका मानना था कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हज़ारों रुपए उसकी पढ़ाई के लिए खर्च किए हैं, इसलिए उसे इसका भी यह कर्तव्य है कि वह पहले कंट्री की सेवा करे. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड्स ऑल हिज फ्रेंड्स वर ओनली लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका, और उसके बाकी जो दोस्त थे वो अमेरिका में लग्जरियस लाइफ जो है वो जी रहे थे. Now the last question, if you were in Akash's position, what would you have done? Answer: if I had Akash's position, I would also have done like him, them. Okay.